Hey guys, welcome back to the channel. जैसे कि आपने देखा होगा, I am installing a fake Akrapovic exhaust on my bike, which is this. So basically, this is gifted by my friend to me. He wanted me to run my bike and sound check it. How does this sounds? तो बस उसी चीज के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के I've been installing this exhaust. तो what we have to do है, सबसे पहले Allen खींचे, इसको खोलो. Then there's one nut here. इन दोनों खोलो, फिर ये सेट बाहर आ जाएगा. ये मिड पाइप है. मिड पाइप से ऐसे इसको कनेक्ट करना है. ठीक है. Then your exhaust. ठीक है. फिर उसको स्प्रिंग अटैच कर दो, then it will be attached. एकदम बहुत सिंपल प्रोसेस है, no rocket science here, so I just do it very fast. So let's sound check it right now. This is without the exhaust system, and now let's just hear this. So this exhaust has been taken out and I have installed this Akrapovic, yeah, whatever you want to call it, extremely fake exhaust. I don't suggest anyone to buy this, install this or anything. मैं बस ऐसे ही शौक के लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ. थोड़ा सा इशू है हर चीज़ में इसकी, मतलब ये फिटिंग वगैरह में और इस चीज़ में, क्लैम्प्स में, इधर नीचे से सेटल डाउन होने में, हर चीज़ में थोड़ा सा इशू है इसमें. तो आई वॉन्ट सजेस्ट यू टू बाई दिस एग्जॉस्ट फॉर योर बाइक, स्पेशली इफ़ यू आर हैविंग अ गुड बाइक. तो उसमें बिल्कुल भी सवाल पैदा नहीं होता इसको इंस्टॉल करने का. ठीक है. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस बाइक एंड हियर हाउ डज दिस साउंड, बिकॉज एवरी वन हैज़ हर्ड टॉक RC390. तो दिस इज़ RC390 विथ Akrapovic. दिस इज़ विथ DB किलर राइट नाउ. इसका DB किलर रिमूव करता हूँ मैं. बंद कर. इस साइलेंट की से DB किलर का नट बाहर खींचते तो ज़रा. इसमें बाहर आ गया. अब आ रही अच्छी आवाज़. दिस साउंड गुड. दिस साउंड वेरी गुड. So this is how RC390 with fake Akrapovic exhaust sounds. I hope the audio is clear. It sounds so sweet, man.
So basically I don't recommend anyone for this exhaust. I'm not really a big fan of any fake copies or anything. Plus this is a very stupendous build. So I'd rather say go with the OEM exhaust, or what you can do is get yourself a branded one. That would be expensive, but okay if you love sound. So I'll be installing an Alpha T in this. I love that exhaust और मुझे OG ही चाहिए, तो I'll rather wait. मेरे को बस साउंड सुननी थी कैसी आती है इससे. Let's eat something first. So this is the exhaust. So this is actually radium kind of thing, grooved on it, and very poor quality stuff, but I guess has sufficient glass wool and all. So this is it. I hope you guys enjoyed this video. Give it a thumbs up if you love the sound of this bike. Alpha T के लिए fingers crossed जल्दी आएगा. Stay tuned. A lot more stuff coming for this bike. पटाखों में बड़ा मजा. Backfire is so good, man. So that's all for your today's video, guys. See you in the next vlog. It's your Dragstar signing off. Don't forget to subscribe, like कर देना और share कर देना, और fake exhaust नहीं लगाना चाहिए. This is just for fun, और अभी निकल जाएगा. I'll be back on my stock exhaust until and unless you find something crazy on my bike. See you in the next vlog. Bye.